फेलियर्स, बिकॉज कहाँ एंड किया था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, दोबारा शुरू करना इम्पोर्टेंट है. सो अनुभव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम आपको डिफरेंट फील्ड के लोगों से मिलाते हैं जिनका एक्सपीरियंस और विजडम आर वर्थ लिसनिंग टू. येस, वी इंटरव्यू पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड जिनसे आप बिल्कुल अनजान हो, बट जिनके जो एक्सपीरियंस है आर लाइक द लाइट इन द डार्कनेस. सो विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो. सो पुराने ज़माने में आपको पता है कि कैमरास वगैरह तो नहीं थे. बैक बिफोर 500-600 ईयर्स देयर वर नो कैमरास. स्टिल उस टाइम के जो रूलर्स थे, किंग्स, क्वींस एंड इनफैक्ट वेरियस फेमस पर्सनालिटीज़, हमें सबके फेशियल फीचर्स एंड फॉर्म्स अच्छे से याद है. ऑल थैंक्स टू दोज आर्टिस्ट हु brought those faces to life on canvas. And still हम उनको हिस्ट्री में, हिस्ट्री बुक्स में, वी कैन सी देयर पिक्चर्स एंड वी आर अवेयर ऑफ आर हिस्ट्री, आर कल्चर. ऑल थैंक्स टू दोज स्केच आर्टिस्ट, राइट? तो अभी ये सुनको आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम जिनका इंटरव्यू लेने वाले हैं, पॉडकास्ट, वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं. सो वेट, देयर इज़ अ कैच एक्चुअली. सो जिनका आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं, जो हमारे अनुभवी है, ही इज़ नॉट एन आर्टिस्ट बट एन एंटरप्रेन्योर. या यू हर्ड इट राइट. फिर आप पूछोगे कि ये कैसे रिलेटेड है आर्टिस्टिक वर्ल्ड से. सो एक्चुअली हिज बिजनेस वेंचर इज़ जहाँ वो डिफरेंट काइंड ऑफ जो आर्टिस्ट है उनको अपने क्लाइंट से कनेक्ट करते हैं. ही प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द बडिंग आर्टिस्ट. So he have a team under him which is of artists, and he have some client base, and we can also approach him. So he'll connect us with the artist, and that artist will do our work. So that's how it goes. So isn't that a great initiative for the budding artist? And so today's Anubhavi is Shubhendu Naiya. So I did talk with him today and it was a great session. So whosoever who's an artist and listening to this, please follow him and look at his Instagram handle, and you can also connect with him. And if you even want to join his team, you can directly message him. So let's look forward for the interview. Hello. Hi Vaishnavi. Welcome to Anubhav. Thank you so much for inviting me over here. Yes, Thank you so actually, much. first things first, we are really very grateful that you accepted our invitation, and that Yeah. too in short time you agreed for the interview and all, and we were very happy to see your enthusiasm. It Yeah. made us push more that we have to do it ASAP. Yeah, of course. I think that we can get it done ASAP so that you can do also more interviews, and I think it is the most smartest decision you have made. So Okay. Yeah, let's go indeed. ahead. Yes. So when I was visiting your profile now, that is Sketchwedge, trust me, I was very intrigued. All the sketches were so beautiful, and the best thing was you were promoting all the other artists too. Yeah. You were taking them forwards, and that was really a very nice initiative. Yes. And that literally made me curious at the same time. Ki matlab, how did this artistic things happen? Happen to you all of a sudden? You said that you were from an IT background, right? So why this inclination towards artistic side and entrepreneurship? How did it happen? So actually, I'm not from an IT background. I think there was some miscommunication between that. Okay. So not from an IT background, but I was just working for a normal job. I did some jobs in my college years when I was in. So just doing jobs so that I can understand where I actually belong to. So that is the most important thing. I think that whenever you are in your teenage years, in your college years, I think people should be doing a lot of jobs and doing a lot of things together so that they can understand where they actually belong to and what their personality type is. So that is what exactly I was doing a lot of things together and trying to understand where I'm actually passionate about and what I should do. So college years mein ye start ho gaya tha. I was doing mass media and communication studies. So I was doing those things and just doing some normal jobs like low level jobs and all those stuff and doing some events. But after that I thought कि यार मजा नहीं आ रहा, मतलब वो चीज नहीं मिल रही है जॉब में वो. So सोचा कि कुछ अपना स्टार्ट करके देखते हैं कि कैसा होता है. तो स्टार्टिंग में तो काफी डिफिकल्ट था क्योंकि पता नहीं होता है, बैकग्राउंड भी नहीं है कुछ बिजनेस में. सो
डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग में, बट आफ्टर दैट things start to happen, like when you put yourself into it, like कोई बैक प्लान नहीं बनाया आपने, कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया है, तो Yes. चीजें होने लग जाती है थोड़े टाइम के बाद. So it took me some time. Like I have been into like this entrepreneurship for since the last 4 years. So Wow. टाइम हो गया है करते करते, बट अभी धीरे धीरे करके वो चीजें समझ में आने लग जाती है. So the base is happening now. So one more question, like why this artistic side only? Like many people think that कि art को अब इतना worth it नहीं है, and there's people can't see a career in art nowadays. Like it's a mentality of many people. So मतलब ये आपको भी happen हुआ होगा बीच में कि like इसमें it's very difficult. So how did you keep up with that? So बेसिकली कैसा है ना कि जब भी जॉब से एंटरप्रेन्योरशिप के हम लोग इसमें ट्रांजिशन करते हैं, सो सबसे पहले माइंडसेट जो चेंज करना होता है वो यही होता है कि मतलब मैं इसको एज ए जॉब की तरह नहीं देखता. मैं आई लुक एट इट कि मेरे को एक प्रॉब्लम है, उसको मेरे को सॉल्व करना है. सो आई केम अप विथ लाइक दिस बिकॉज मेरी एक फ्रेंड थी, शी वाज मेकिंग सम आर्टवर्क्स इन द लॉकडाउन बैक इन 2021. So I just saw those sketches. I'm not into like these sketches. I don't understand these things very much. Okay. So I just thought कि यार ये इसको कुछ मोनेटाइज कर सकते हैं, मतलब देखते हैं इसको बेच करके कि कुछ बनता है कि नहीं. So I started promoting it through like free channels, doing free marketing. You do not, and this is also a myth in entrepreneurship that you need a lot of money to start. You can start literally with zero. So I just started doing some free marketing, getting some traction out of it. So I thought कि इसमें market में demand है, people are buying sketches for like gifting somebody. So I thought कि ये gifting product में आ सकता है, and I started researching about it that other companies are doing it also or not. So I found that there are several companies doing it already. So I understood that this can be made something very big. So I started doing this marketing on Instagram and getting a lot of artists on board. So we started with one artist, and now we are like around like 10 artists, and so on and so forth. We are building. So we get a lot of orders through Instagram and other channels also. Like there are other channels that I've also built. So वहाँ से ऐसे ऑर्डर्स आने लगे. और जो आर्ट में जो करियर की जो बात आती है ना, वो ऐसा होता है कि जो अगर आप सिर्फ आर्टिस्ट की इंडिविजुअल की बात करो तो उसका माइंडसेट बहुत ही ब्लॉक होता है कि मैं आर्ट बना रहा हूँ, उसके पैसे मिलने चाहिए, बट वो ये नहीं समझते कि पैसे देगा कौन, who is going to get that money. So it's not about the product, it's about how to sell it. People don't know how to market themselves, people don't know how to sell. So that is the most important art that you need to learn, ki how to sell it. If you know how to sell, you can sell anything. If you can sell rocks, you can sell anything. Like it doesn't matter. पत्थर बेच सकते हैं लोग, कंक्रीट बेच सकते हैं लोग, बेचते ही है. So art तो कोई भी बेच सकता है. You just have to understand it. Yes. So this is it कि आप artistic side में कैसे हैं. One more thing, like अब work life balance आप कैसे maintain करते हो? Like बहुत बार ऐसे भी होता होगा, you might feel कि overwhelming हो रहा है अब बहुत ज्यादा. उस केस में आप burnout कैसे prevent करते हो? यार वो तो ना रोज का ही अभी बर्नआउट का तो, बट मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना बर्नआउट एंड डिप्रेशन ये सब चीजों से डरते रहते हैं, एंड दैट इज व्हाई लाइक दैट माइंड गेट्स कंट्रोल ओवर योर बॉडी. बट व्हेन यू थिंक ऑफ इट एज इफ कि ये मेरे ग्रोथ का पार्ट है, लाइक इट इज अ पार्ट ऑफ यू, एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज दैट बर्नआउट होगा. इट्स मेकिंग मी स्ट्रांग. इट्स लाइक गिविंग यू नेक्स्ट चांस कि आप मतलब हील हो जाओगे, फिर उसके बाद आपकी बॉडी और बेटर बन जाएगी, फिर आपको नेक्स्ट टाइम उतना बर्नआउट नहीं होगा, फिर आपको और नेक्स्ट लेवल का चैलेंज चाहिए होगा. तो आपको उससे डरना नहीं चाहिए. मेरे हिसाब से बर्नआउट होगा अगर आप बहुत सारी चीजें करोगे. सो आई थिंक like burnout is a good thing for you if you look at it in from this perspective. Yes. Yeah, so I think it's just a perspective shift. And yeah, like if you're getting burned out, just take some break, like do some exercise, do some walking. Don't just sit on the desk for like 8 to 10 hours. You're gonna get, obviously you're gonna get stressed out, and it's not good for your health as well. So take some breaks in between, like 20-30 मिनट काम करो, थोड़ा सा उठ जाओ डेस्क पे से, थोड़ा चल के आओ, do some skipping or do whatever you want to do. I'm just working from home, so I can do skipping whatever I want. So यहाँ पे पीछे देखोगे तो मेरे यहाँ पे डंबल्स भी रखे हुए हैं, तो हम I do some workouts over there. Yeah, so I do some workout in between so that it just refreshes me again for doing the hustle forward. Okay. And बहुत बार ऐसे भी होता होगा कि आपको आर्टिस्ट लाइक you have 10 artists under you, right? So कभी कभी ऐसे भी होता होगा कि सबको मैनेज करना sometimes it's difficult, right? Yeah. So how you manage them? Like
most important part is managing your clients as Yeah. well as the persons like which are who are working with you. So how you do that? It's a very tricky question actually, and very good question as well, because managing people, like it's a very difficult thing It's a actually. task, yeah. Yeah, so I think like it only happens when you have a proper SOP, in the sense systematic operating procedures written over here, कि मतलब आप communicate कर रहे हो कि ये हमारे rules है, आपको ये follow करना है, अगर आप ये कर रहे हो then you're a good employee, if you're not doing it then you're a bad employee, as simple as that. So when you have those things written and you're communicating back and forth properly, तो उसके बाद क्या होता है कि स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होती है, लेकिन बाद में आप धीरे धीरे करके वो क्लैरिटी के साथ, जैसे बातें होती रहती है कि मेरे को ये चाहिए, आप ये नहीं कर रहे, सो यू नीड टू डू Yes. दिस, यू नीड टू करेक्ट दिस थिंग. तो स्टार्टिंग में टाइम लगता है, बिकॉज एवरीबडी इज डिफरेंट, किसी किसी को अडेप्ट करने में टाइम लगता है, बट जी. आफ्टर अ व्हाइल लाइक वो क्लैरिटी के साथ वो बैठ जाता है, मतलब इट स्टार्ट्स बिकमिंग स्मूथ. सो द स्टार्टिंग थिंग इज कि वो मोटिवेट रख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कि वो भी मोटिवेटेड रहे. सिर्फ मैं मोटिवेट रहूंगा तो मुझे तो Yes. क्लैरिटी है, बट if they are not having that clarity, I have to put my thoughts into their brain with that positive energy and all of that, ki ye you have to do it, it's good for you and all of those things. So after a while with clarity, I think you can do a lot of things. Clarity is most important. Most important thing, yeah, it's very good to hear that. One more thing, कभी कभी ऐसे भी होता होगा like कि आपको मतलब जैसे you have faced many challenges while starting with this journey, so like बाकी artists को भी challenges आते होंगे, so how you motivate them like to keep going? या सो इसमें ना कैसा होता है कि आर्टिस्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी किसी का आर्ट थोड़ा अलग होता है, किसी किसी का अलग होता है. अभी कस्टमर को कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का आर्ट चाहिए होता है. Yes. So what happens is that is why like I'm saying that clarity is very much important, कि कस्टमर को क्या चाहिए. And those art sometimes artists do not understand the business side of things. They Yes. just they are too much emotionally like invested into making that artwork, that they are like too much attached to it, कि ये अच्छा है, ये अच्छा है. But if customer is saying कि ये नहीं अच्छा नहीं है, so you have Yes. to accept it and like move on. Move So on. I think like I'm still like figuring these things out and trying to like build up that clarity between them, and having and making those communications happen, and still saying them that this is how you need to. And like we have some like communications on phone all the time, so I keep on telling them about these business things, that what you need to correct in your mindset. So after a while वो भी समझ जाते हैं, वो भी बोलते हैं कि अभी मुझे समझ में आ रहा है, I now look at things differently. So yeah, I think this communication is very much important. Very important. Communication से बहुत सारी चीजें solve हो जाती है. यस. एंड वन मोर थिंग, लाइक जैसे आपके पास कोई क्लाइंट का ऑर्डर आया, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मुझे एक स्केच बनवाना है, सो आप 10 पीपल आपके पास है, उसमें से आप कैसे अलोकेट करते हो किसी को कोई चीज? सो वो बहुत सिंपल होता है. जैसे कभी जिसके पास हमको पता होता है कि अपने अगर अपने हम बोल दिया कि अभी मेरे को 10 दिन के अंदर चाहिए, 25 तारीख को चाहिए, तो हम Yes. देखेंगे कि किसके पास कौन सा वाला ऑर्डर अभी फ्री होने वाला है, जिसका Yes. जब मतलब वो प्रायोरिटी पे आता रहता है कि किसका अभी कंप्लीट होने वाला है, तो उसको फटाक से अलॉट हो जाता है नेक्स्ट वाला. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो कि अभी आप महाराष्ट्र से हो, तो अभी मेरे पास अभी मुंबई में एक आर्टिस्ट है, तो मैं यहाँ से अगर आपको शिप करूंगा तो वो जल्दी फास्ट पहुंचेगा, या फिर Yes. अगर मैं कहीं दूसरे स्टेट से भेजूंगा तो लेट हो जाएगा. तो फिर उस हिसाब से हमें वो प्लान करना होता है. थोड़ा मैनुअल वर्क होता है कि देखना पड़ता है कि किसको अलॉट करना है, सो उस हिसाब से Yes. जाता है. यस, तो आपके पास थ्रू आउट द इंडिया यू हैव आर्टिस्ट, राइट? या ओके. एंड वन मोर थिंग, लाइक जैसे अब बहुत से लोग सोच रहे हैं दैट दे वांट टू स्टार्ट देयर एंटरप्रेन्योर जर्नी, सो व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव टू देम कि हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू प्रोसेस एंड हाउ टू हैंडल फेलियर? एक्चुअली दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आई गेस. या सो आई थिंक लाइक जो भी स्टार्ट कर रहे हैं ना, जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, सो डोंट लुक एट इट एज इफ कि मेरे को बिजनेस करना है. स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स अराउंड यू, मतलब आसपास में क्या हो रहा है. आई विल गिव एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, इफ यू जस्ट गो टू Amazon और वहाँ पे देखो कि लोग क्या बेच रहे हैं,
Amazon doesn't have its own product. People are like sellers go over there and list their products. I can go over there and list my product over there as well. So Yes. देखो कि वहाँ पे लोग क्या बेच रहे हैं. You can see like millions and millions of products over there listed. और normal sellers हम जैसे ही लोग हैं. So go over there, Yes. see कि कितने सारे लोग list कर चुके हैं. तो आप समझो कि उन्होंने वो product लाया कहाँ से. Those are not big companies. Like मैं आज चाहिए तो वहाँ पे कुछ list कर सकता हूँ. It's pretty simple. It's like free process. So आप समझो कि वो product आया कहाँ से वहाँ से. उन्होंने probably किसी wholesaler को पकड़ा होगा. वहां से वो प्रोडक्ट का उन्होंने पिक्चर्स लिए होंगे. दे लिस्टेड इट ओवर देयर ऑन Amazon एंड दे स्टार्टेड सेलिंग. जब उनको ऑर्डर्स आने लगे उन्होंने होलसेलर से इन्वेंट्री मंगाई होगी. ऐसा भी होता है कि वो लोग ने इन्वेंट्री मतलब बल्क में ना मंगाई हो. वो लोग बस उस फोटोज को वहां पे लगा रहे हो. फिर जब ऑर्डर आ गया तब उन्होंने इन्वेंट्री फटाक से शिप कर दी. सो there are a lot of things that you can understand if you start observing things around you. Amazon, Flipkart, online पे कोई बेच रहा है, हमको देख करके देख लो. हम लोग स्केच बेच रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बेच ही रहे हैं ना. सो you can sell anything. Like you just have to observe things कि अच्छा यहाँ पे ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं. Try to understand कि उसका origin कैसे हो रहा है. How did they start it? If you understand the origin of it and like backtrack everything, like reverse engineer everything, then you will be able to understand that how can you also start it. And like you can make money with everything. Like you're doing podcasts now, you can make a big amount of money in this industry as well. Like YouTube पे बहुत सारे podcasts. If you do it correctly, if you keep on doing it, some of the videos are going to get viral. Or hope this gets viral. Yeah, that's good. So maybe like so we can you have to try. And like this industry is also growing, podcast industry. And in India मतलब ज़्यादा लोग मैंने देखे नहीं करते हुए. So I think like you can approach a lot of people and get like 30 videos in a month. If I was you, I would have done that, like 30 videos in a month. Like 30 videos record कर दो दिन में. अभी आज ही अब मैं बोलता हूँ 10 वीडियो रिकॉर्ड कर दो और डाल दो वहाँ पे. तो you have to approach a lot of people. It's a lot of work, but that's how you get viral. So yeah, that's the thing. Yes, and you said about Amazon also. तो आपका जो product है, like sketches, are they available on any online sites, or like apart from approaching you, are there any online sites for that? हम लोग ना अभी Amazon पे जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. एंड वी आर लॉन्चिंग आवर वेबसाइट सून, लाइक प्रोबेबली दिस मंथ ओनली. सो हम लोग ना अभी मतलब बहुत सारी चीजें अभी करने को देख रहे हैं. अभी तक फिलहाल हम लोग फ्री में चल रहे थे. काफी ज्यादा फ्री मार्केटिंग करी हुई है डिफरेंट लाइक सोशल मीडिया चैनल्स. बहुत सारे चैनल्स में किया हुआ है. तो जैसे आप इंस्टाग्राम ले लो, पिंटरेस्ट पे ले लो, टिकटॉक पे ले लो. टिकटॉक बैंड इंडिया में, फिर भी हम लोग चलाते हैं VPN यूज करके कैसे ना कैसे जुगाड़ करके. सो ऑर्डर्स आ जाते हैं वहां से, इंटरनेशनल ऑर्डर्स आ जाते हैं. सो ऐसे करके आप फ्री में कर सकते हो. बट आफ्टर दैट यू हैव टू आल्सो गो टू पेड मार्केटिंग सो दैट यू कैन ग्रो अप द बिजनेस. सो ऑब्वियसली लाइक Amazon भी फ्री है. तो आई एम लुकिंग टू put our products over there, and we're gonna soon start it probably this month because I like speed, so I'm gonna do it fast. Yeah. And one more thing, like apart from that, do you have any future plans कि आपको future में ये चीज करनी ही है? Like, are there any future goals set for you? So देखो फ्यूचर गोल्स ना ऐसा है कि ज्यादातर करके लोग बना के बोलते हैं कि मेरे को ये बनाना है. बट उसका मेन इंटेंट जो होता है ना वो पैसा ही होता है खाली. कि उनको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है. तो सिंपल सी बात है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मनी इज गोइंग टू कम इनटू द बिजनेस. मोस्ट मनी इज गोइंग टू कम बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई कैन डू. जैसे हमने बात करी कि Amazon बात करी, हमने वेबसाइट्स की बात करी, ऐसे ऐसे. तो बहुत सारे चैनल्स होते हैं. तो आपको देखना होता है कि कहाँ से फटाफट ट्रैक्शन आ सकता है. ट्रैक्शन इन द सेंस most amount of like impressions you can get and all those insights you can get. So हमें वैसे देखना होता है. and then we need to plan कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो सकता है. and then we need to start that thing. So future goals वही है कि we need to prioritize कि सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है और उसी को हम लोग को हमें इंटीग्रेट करना होगा हमारे कंपनी के साथ, और ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ले सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर सके. Okay. And since you are around like various artists, तो did it ever happen to you कि आप भी थोड़ा artistic side में अपना hand थोड़ा clear करें, like you are getting inclined towards it? Is it happening to you? No, that is not happening honestly because मतलब मैं ना पहले ड्राइंग करता था. लाइक स्कूल टाइम में स्केचेस भी बनाता था. आई मेक स्केचेस. आई कैन मेक सम लाइक बेसिक लेवल स्केचेस, नॉट दैट गुड. बट मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था इन ड्राइंग. आई थिंक आई गेट बोर्ड लाइक सिटिंग एंड जस्ट डूइंग लाइक ड्राइंग फॉर like 6 to 8 hours. So I like to face various adversity and all of those things, like hustling part of things. So business side में मैं ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ. एंड आर्टिस्टिक अभी तक तो इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, बट हो सकता है और ज्यादा लोग आ जाए तो इन्फ्लुएंस हो जाऊं.
Yes, actually, artistic, like when I was looking towards art now, so it's the form like you create something. So many people believe it as a stress reliever. Indeed, I also do. And many people even call it a meditation. Yeah. Yeah. So So, yes. सो हाँ, बहुत सारे आर्टिस्ट ये बोलते हैं एंड हम लोग बीच में Q&As करते रहते हैं इंस्टाग्राम Yes. पे, तो वहाँ पे भी लोग बोलते हैं कि ये उनके लिए स्ट्रेस रिलीवर है एंड दोज थिंग्स, Yes. बिकॉज आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट इज, बट लाइक मे बी वैसा होता होगा कुछ, I don't know, maybe because like they are completely into that flow state of drawing something, creating something. So I think it's with everything. Like if you go into that flow state in the sense कि आप कुछ काम में बहुत टाइम तक इन्वॉल्व हो गए, पूरी तरीके से अपना अटेंशन Yes. आपने डाल दिया, तो इट्स लाइक दी हैप्पीनेस इंडेक्स बन जाता है। वो एक हैप्पीनेस इंडेक्स है, वहाँ पे आपको ज्यादा हैप्पीनेस मिल जाती है, ज्यादा पीस मिलता है। सो आई थिंक इट वर्क्स लाइक दैट, सम मेंटल मॉडल वर्क्स लाइक दैट कि आप स्केच बना रहे हो बहुत टाइम तक, तो आपको वैसे अच्छा फील हो रहा है, मे बी समथिंग लाइक दैट। Yeah. So your happiness index is hustling, right? To pushing yourself. Yeah, I like to push myself, so I do those things. So I think it's more fun for me. Matlab, I think like every person is different. They don't need to copy somebody. It's okay completely. Yes. So I was like this from my childhood. I think I was like an energetic kid, always trying to hop from here to there all the time. So I think that's why I'm like this. Yes, it's very good to hear that. So according to you, कोई ऐसा revolution आ सकता है artistic side में? Like अभी AI भी आए हैं, तो many people are like AI से भी काफी ideas ले रहे हैं and they are making it. So do you think उसका कोई influence आ सकता है and it might help you in future, something like that? Yeah, definitely. AI से बहुत कुछ change हो जाएगा. AI is going to change a lot of things in the art world. Because AI can create a lot of things that we people are thinking from years कि हम लोग create कर सकते हैं, वो उसको एक ही सेकंड में सब कुछ create कर देता है. So I think Yes. there is going to be some shift into that industry, and there has been started to happening this shift. अभी हो रहा है shift यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि shift तो जरूर होगा इसमें AI की वजह से, और हमें उस चीज को अडाप्ट करना होगा जल्दी से जल्दी. Yes. अभी जैसे AI करके AI आर्ट आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही है, डिजिटल आर्ट्स बनाते हैं लोग, AI आर्ट बनाते हैं. सो देयर इज गोइंग टू बी शिफ्ट, और जितना हो सके आई थिंक यू हैव टू बी doing things fast so that you can get ahead of the competition, because लोग ज्यादातर करके लोग बहुत slow है. They do things very Yes. slowly and they do not adapt to things. They are still like कि पुराने जमाने का mindset है उनका कि हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे, things are going to change forever. It can change like very quickly if you do Yes. things fast. So AI आगे आपको समझना पड़ेगा कि AI कैसे काम करता है, and how is it going to help you currently in your whatever business you are doing. और अगर आप आर्ट बना रहे हो, understand how AI is going to help you. AI can help you with making sketches fast, so you have to understand it. I cannot reveal all the things obviously, but like you Yeah. have to understand if you're into that industry how AI Yes. can help. Yes. Yes. Actually, can we do a surprise round for you now, like which we planned? Yeah, sure. Okay. So what we are gonna do is I'm gonna give you a question जिसका आपको only one line में answer करना है, ठीक है? Okay. So your first reaction when you crossed over 100K, like Instagram followers are more than 100K. So what was your first reaction? कुछ नहीं यार, सो रहा था सही में, बताओ. कुछ लगा ही नहीं. ऐसा ऐसा लगता है लोगों को कुछ हो जाएगा, बट कुछ होता नहीं. तो एक लाइन से ज्यादा हो गया, बट कुछ हुआ नहीं. Okay. So आपके अकाउंट पे जब मैंने देखा there are so many beautiful sketches there. So आपका कोई favorite sketch उसमें से? हाँ, एक्चुअली बहुत सारे स्केचेस है उसमें से. अभी स्केचेस का कोई नाम तो नहीं होता ना, तो अब कैसे बताओ कि कौन सा स्केच फेवरेट है. So it's related to what, आप ऐसे भी explain कर सकते हो. यार मुझे वो ऐसे एक स्केच में बहुत सारे लाइक इवेंट्स कवर होते हैं. मतलब एक MS धोनी का एक स्केच है जिसमें बहुत सारे उसमें इवेंट्स कवर किए कि उनके लाइफ के क्या हुए. तो एक ही स्केच में बहुत सारे चीजें दिखाई हुई है, तो आप देखोगे Okay. उसमें थोड़ा स्क्रॉल करके तो आपको दिखेगा. तो आई Okay, लाइक I'll दोस. definitely see. Yeah. And one more question. So this question is like your three best budding artists on Instagram. You can take name of your team members also. या सो एक संजय है, Yes. एक है अमन करके एक है. आई Yes. लाइक हिज स्केचेस वेरी मच. और एक है
आई थिंक एक प्रदीप करके एक है, तो उनके स्केचेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. सो इनमें से दो हमारे साथ वर्क कर रहे हैं. नाम आई विल नॉट टेक द नेम्स, बट एक से काम भी कर रहे हैं. सो आई रियली लाइक दीज थ्री पीपल स्केचेस. ओके. कोई कभी कभी ऐसे हुआ है कि सिंस यू आर रनिंग अ बिजनेस ना, तो कभी कभी ब्लंडर होता है एंड दैट्स टोटली नॉर्मल, कि कभी किसी को मतलब जैसे किसी ने कुछ और बनाने बोला है कि हमें ये स्केच चाहिए, पर थोड़ा कभी कभी लाइक आर्टिस्ट भी पूरा सेम टू सेम तो नहीं बना सकते, तो ऐसा कभी हुआ है? ये कभी नहीं, ये रोज की कहानी है. तो ये रोज ही होता है. तो हम लोग रिविजन्स करते हैं, यानी कि कुछ रॉन्ग हो जाता है, फिर उसको हमें वापस से कोलैबोरेट करके क्या मिस्टेक से उसको सॉल्व करना होता है. बट वी ट्राई टू मिनिमाइज दोज थिंग्स एज मच एज पॉसिबल. बट आई थिंक लाइक एवरी कोई भी काम करो उसमें ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा. यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, कुछ और काम करोगे तो कुछ और प्रॉब्लम है. सो Yes. इट्स लाइक द नेचर ऑफ बिजनेस एंड यू हैव टू लाइक अंडरस्टैंड कि ये आपके अभी लाइफ का हिस्सा बन चुका है. या एंड कुछ क्लाइंट्स कभी कभी क्रैंकी होते हैं थोड़ा, सो हाउ यू हैंडल सच काइंड ऑफ क्लाइंट्स? लाइक किसी किसी का एकदम स्पेसिफिक होता है, नहीं मुझे ऐसे ही चाहिए, डूइंग इट वेरी रॉन्ग, ऐसा कुछ. हाँ, वो भी होता है ऐसे कि सबको मतलब हर किसी को तो खुश कर ही नहीं सकते कभी. उसमें यस. से 10 लोग में से हो सकता है एक तो नाराज हो जाएगा, आपको गालियां भी दे देगा. लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो और थोड़ी बहुत आपने खराब काम भी कर दिए बीच में, तो इट्स अ गुड इक्वेशन. क्योंकि आप यस. सबको दुनिया में खुश वैसे भी नहीं कर सकते. इट्स नॉट अबाउट वर्क. आप कोई भी रिलेशन भी लगा लो, वहाँ पे सबको खुश नहीं रख सकते आप. कोई ना यस. कोई चिढ़ेगा, कुछ ना कुछ होगा. तो आई थिंक जब तक आप ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो तब तक इट्स गोइंग टू बी गुड. अगर आप ज्यादा रायता फैला रहे हो तो इट्स गोना बी बैड. सो डू more good than doing more bad. I think that's the happy equation. Okay. And what do you prefer, like interacting with clients on like social media site or on call? So what do you prefer? So I actually like to do the chatting work itself with the clients. I do not like to take calls because एक बार मतलब people make a lot of calls. Like if you are gonna pick one call, they're gonna give you 10 calls in a row completely. So I Okay. prefer कि call पे जितना ना लाऊं तो अभी ठीक है. बट वी आर गोना इंटीग्रेट दैट कॉल सिस्टम सून. लाइक अभी तक हम लोग की टीम उतनी बड़ी नहीं है कि हम लोग सपोर्ट में कॉलिंग भी ला सके. बट वी आर गोना डू इट सून. कॉलिंग भी हम लोग लाएंगे बिकॉज इट्स beneficial for the customer and I understand it, so we're gonna do it. Yes. So what is your like favorite platform? Like on social media also, what is your favorite platform to connect with clients? Well, it depends upon कि कौन सा business है. If we talk about our business, then it's going to be Instagram. Yes. But if you talk about some other businesses, it depends like upon the nature of business. If you are selling some like marketing stuff and all of that, then LinkedIn is going to be good. So Yes. it depends. Like अभी आप जैसे YouTube के podcast कर रहे हो, so you need to understand कि आपके target audience क्या है. If you're reaching creators, then Instagram is a good platform. But if you want more business people, then go to LinkedIn and you'll find a lot of business people over there and जो start कर रहे हैं, and you get a lot of clients from there as well. Okay. And what was your biggest breakthrough in this entrepreneurship? Like what was your biggest like achievement till now? Well, I think जब भी आपके ना मतलब आपको ये समझ आ जाता है एक पॉइंट के बाद कि ज्यादा लोग ना मतलब जब भी आप ज्यादा लोग को हायर कर लेते हो तो क्या हाँ. होता है कि उसमें से ऐसा लगता है कि ज्यादा लोग हायर कर लिए, ज्यादा पैसा आ जाएगा, ज्यादा रेवेन्यू बन जाएगा. बिजनेस में ऐसा होता नहीं है बिकॉज पीपल मैन वो एफिशिएंट नहीं होता कई बार. सो यू नीड टू बिल्ड स्पेशल फोर्सेस, लाइक नॉट लाइक ए आर्मी. यू नीड टू बिल्ड स्पेशल फोर्सेस जो कि मतलब कुछ लोग हैं बहुत अच्छे से काम करे, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, एंड you can like communicate with them and they can get things done very fast. So when I realized ki there were some few artists with me connected who can do things very fast, so what happens is it frees my brain from everything else. Like I can focus on the other parts of the business to grow the business. But agar aise bahut sare log hain ki who are like constantly making mistakes, so mera sara brain power wahi pe chala gaya and I cannot do the other things. So when I realized, like there was a point when I realized 1 year ago,
when I have these 2-3 people in my team whom I can connect with and who were able to do things very fast and very efficiently, and I understood कि मेरे पास बहुत सारा time है. So I think that was the breakthrough point when you hire good people in your company. So Yes. hiring is the most important part. You need to hire slow and fire fast. That is the like motto that you need to adopt. Okay. So do people get fired? Like real में सच्ची you fire people if you think कि ये requirement maintain नहीं कर पा रहे हैं. Yeah, obviously, like we need to understand कि किस क्या जरूरी है business के लिए. Yes. If it is not good for the company, then you have to You go. have to do that. Yes. So what happens is Instagram pe there are like not these uh, like most of the people are teenagers, so they do not still understand a lot of things, and they're just playing around all the time. They're just making sketches for fun, not looking at the business part of it. So sometimes it does become challenging to find good artists. So if you're a good artist looking at this video, just reach out to me. And Yes. yeah, it's my sketch which. Yes, my sketch wedge. Yeah. And how did this name came up like sketch wedge? See, name brand का name choose करने के लिए so it has to be something which like मतलब जो आपके दिमाग में याद रह जाए. So it has to be simple. Like people put some hard names की arts. I don't know, art don't takes या what I don't know what I Yes. don't even understand what those are. So it has to be very simple and easy to remember. So I just googled it कि sketch का rhyming क्या हो सकता है. तो I got a Yes. lot of things. Sketch का wedge हो सकता है. So we put it sketch wedge. Yeah, it's a very nice name. Actually, it's easy to remember more Yeah. of. Yeah. So who is your mentor as entrepreneur? Like who do you like consider going to when you feel any challenges in your journey? So what I do is whenever I do not have an answer to anything, so I do have a lot of like people on the internet whom I look up to. So what I do is like I have their courses that I've taken, and I read a lot of books. So I have like around 100 books in my shelf, and all about entrepreneurship, psychology, business mindset, all of these things. So those things do help, but sometimes still like if you're not finding the answers like through videos and all those mentors. So what you can do is see what you need to understand is like if you're having a problem, someone else might have also had that problem in the past. So Yes. so what I do is I look at my competitors कि जो मेरे से बहुत आगे के लेवल पे वो running those companies. So what I do is I look at कि वो लोग उसको कैसे कर पा रहे हैं, and what are the, and I reverse engineer the process like the way I said a few minutes back. So what I do is I understand कि उन्होंने कैसे marketing करी थी, what were the things that they implemented, and I do a lot of research on that on the internet. Google करना होता है. Then you need to use a lot of extensions that are available and see how they're getting those traction, कहाँ से उनको traffic मिल रही है, and all of those things. So if you do those research properly, or if you keep on like taking some free time for yourself and meditating upon it कि क्या सही चल रहा है क्या नहीं चल रहा, so to bring your life in order, then I think it's going to be fine. You're going to find some answers, good answers, and you're going to get ahead with life. Yes. As you said, you are a book lover also. So which one is your favorite book? Which one is my favorite book? Well, You can take 3-4 names also. Like Yes, which my yes. so business के उसमें एक बुक है रेड ओशन ब्लू ओशन ऐसे कुछ नाम है उसका. So Okay. it's a very good book that I would refer. And I think दूसरी एक साइकोलॉजी को लेकर के एक बुक है which is like very common, which is Think and Grow Rich. Yes. You can read that book, but it's like basic level. मतलब अगर कोई start कर रहा है, for them it is. But ये जो red ocean blue ocean, it's for like business strategies. So if you're going into that advanced stuff, you can go into that. And if you want to know about productivity, so Eat That Frog करके एक book है. You Yes. can read that book. तो ऐसे बहुत सारे बुक्स है. लाइक इफ यू आर गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेकअप लाइक समथिंग, तो उसके रिलेटेड भी कुछ बुक है. जैसे you can heal your life by, I don't know, remember Paulo Hey, Coelho. Harold Hay something. Yeah, I don't remember Heal the Your Life. author name. Yeah, Heal Your Life. It's a very good book as well. Yes. So ऐसे Yes. बहुत सारे बुक्स है जो डिफरेंट पार्ट्स, मतलब आपको देखना है कि आपके करंट लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है. इफ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स इन योर जॉब, then you need to find a like book related to job जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी. Just go to internet and find कि jobs related क्या क्या books available है, उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी. Yes.
That's true, actually. Actually, I'm a bookworm myself. Like, I read daily. I read Oh, some books daily. oh, Yes, I usually read self-help and books. yeah, So, वेरी गुड. yes. तो आपकी फेवरेट कौन सी बुक्स है फिर? मेरी फेवरेट अभी फिलहाल मैंने जो रिसेंटली बुक पढ़ी है उसमें द मॉर्निंग मिराकल मॉर्निंग करके बुक है. Oh yeah, I've also read it. Yeah, that actually that book Yeah, is very great and that have a huge yes, impact on us. yeah, Yes. true. So you implement that also, like उसमें जो भी strategies सब दिए है, do you implement that? I used to implement it back in 2019 जब मैंने पहली बार बुक पढ़ी थी वो. So वहाँ पे वो बोलते थे 5 AM को वेकअप करना, ऐसे कुछ बोलते थे वो. Yes, 5 या yes, 4 AM. So I used to wake up at 4 AM and do those stuff. And yes. yeah, I mean it works if you actually implement those things. It's gonna work. And the most important thing is कि ना बुक में क्या होता है कि कोई चीजें मतलब रिपीटेटिव होती है, लेकिन लोग क्या Yes, समझते हैं कि कुछ कुछ बोला नहीं है उस बुक में, लेकिन ऐसा नहीं है. इट्स लाइक if you keep on reading those things again and again for like 200 to 300 pages, so it gets like ingrained in your fitted brain. in mind. Yes, Yeah, yes. so that is the most important thing कि अगर एक बात भी बोल रही है, बोला जा रहा है बुक में, and if you're reading it for 300 times in every pages, then something is going to happen. Like, so reading books is like you have to read books with an open mind, so it's going to get ingrained in yourself and you can like implement those things. So implementation is also very much important. किसी पढ़ के तो कुछ होने Important. वाला है. नहीं Yeah, होने वाला है. Yes. yeah, Initially, I used to do that only. I was reading books endlessly, and now I started implementing it. yeah. So actually अभी तो मैंने बुक्स रीड करना बहुत कम कर दिया है, बिकॉज ऐसा लगने लगा है कि ब्रेन में बहुत ज्यादा भर चुका है सब कुछ, बट Yeah. काम बट एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है. सो व्हाट हैपेंस इज लाइक हमारी ट्रेनिंग है बचपन से कि हम लोग स्कूल कॉलेज में गए, वहाँ पे सिर्फ लर्निंग लर्निंग करी बैठ करके, एग्जीक्यूशन कुछ किया नहीं. सो 10-15 साल ऐसे निकल गए, फिर 20 साल निकल गए, एग्जीक्यूशन तो कहीं पे भी नहीं. फिर हम लोग सोचते एक दिन आने के बाद हम जॉब करेंगे, वहाँ पे जाके एग्जीक्यूशन हो रही है. सो हम लोग की हैबिट ही वैसे बन जाती है कि सिर्फ कंज्यूम करते रहो, डू नथिंग. Yes. Do I nothing. think Yes. it had to be like a happy equation कि learning करो, execution करो. Then if you are facing some problems in the execution, then go to learning to fix that thing. Otherwise, Yes. don't go to learning. Yes. Actually, that's a very good advice. Actually, आपका जो brand है, तो what is the concept behind it? सो कंसेप्ट का तो नहीं पता, बट मिशन ये है कि बेसिकली हमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करनी है बाय सेलिंग sketches. Like it could Yes. be sketches or it could be painting, something that provides employment to the artist. So मेरा मेन फोकस है कि इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है आर्टिस्ट को, उसको सॉल्व करना है. अभी वो कैसे हो रहा, कि वो मेथड क्या है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट एम्प्लॉयमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर आर्टिस्ट. दैट इज माई मोटो. इफ यू आर सेलिंग कोर्सेज कि आर्टिस्ट कोर्स बना रहे हैं, इफ दे आर सेलिंग इट टू अदर पीपल, अदर आर्टिस्ट फॉर मेकिंग मनी, कि हम लोग सिखा करके टीचिंग करके कर रहे हैं, डजेंट मैटर. इफ यू आर गेनिंग मनी, इफ यू आर हैविंग एम्प्लॉयमेंट, that is the most important thing. So that is my motto with Sketchwitch. That is what I want to do. Yes, and one more thing, जैसे अभी Sketchwitch primarily sketches को बढ़ावा दे रहा है. So in like over time, are you planning to extend it to other artworks also? Like there are different kind of other artworks also. So are you planning to expand that in that field also? Yeah, obviously, I'm definitely looking to diversify, and we are planning to increase our product line as well. Because sketches सिर्फ it's not like कि आप photos भेजोगे उसके sketches बना दिए. It's one product, but another product can be like if you are making some digital artworks and printing it on T-shirts, mugs, and all these merchandises and products. So it's another type of like work that you can do. Like it's called as print on demand. So Yes. in the sense like आप डिजाइन्स बनाते हो, उसको स्टक करते हो प्रोडक्ट्स के ऊपर और उसको भी सेल कर सकते हो. सो ऐसे भी चीजें होती है. एंड देन यू आर हैविंग दिस वॉल आर्ट पेंटिंग्स, म्यूरल पेंटिंग्स एंड ऑल दिस स्टफ दैट you make, and then you sell it for higher prices to, like you can go into exhibitions and all this stuff, and you can also sell it online. There are a lot of marketplaces where you can list those and sell those, and like if you have the right marketing tactics and strategies. Yes, marketing is very important actually. Yeah, very important. So what else you do for marketing? Like apart from like you said कि आपने digital भी try किया. So apart from that आप और क्या करते हो marketing के लिए? सो एक होती है फ्री मार्केटिंग, एक होती है पेड मार्केटिंग. फ्री मार्केटिंग में क्या होता है कि आप कंटेंट प्रोड्यूस करते हो. द ओनली एक्सपेंस इज गोना बी योर कंटेंट एक्सपेंस, इन द सेंस यू आर गोना
have to invest time into it. You have to Yes. produce a lot of content, and then you have to put it on the internet in the sense आप कहीं पे भी put कर सकते हो, social media पे post कर सकते हो. You can go to Quora and answer some question over there and then put your link to your like buy if you want to buy this or we make these things, and you can answer a lot of things over there. Quora पे हो सकता है, आप फेसबुक पे कर सकते हो, put a lot of content. So these are all free marketing. मतलब free marketing में you have to put a lot of content over the internet and attention. We live in an attention economy. See, अगर मैं आपका attention ले सकता हूँ and if I have something that you want to purchase, then you're gonna buy it. So the most Yes. important thing is getting your attention. So we got your attention because we had some sketches listed over there which might have gone into the explore Yes. page. Then you might have found us. So Yes. put your attention that way. So if I can get a lot of attention from a lot of people, then we are going to have a lot of sales. So that is free marketing, and you can write a lot of blogs as well. And then people do it. A lot of companies do it. They make a lot of blog posts related to paintings and all that stuff, and that is their marketing strategy. They do not spend a single penny on like marketing. But the if you talk about paid marketing, then like you need to run these ads on Facebook and Instagram and YouTube. These things are also a part of it. Yes. So apart from Sketchwedge and this venture, you have any other side business running on? Yeah, I do have like two businesses that I'm a part of currently. So one is where I sell marketing and like this social media management to like these other companies that they want to do some marketing on Instagram. So especially on Instagram, I build their page and do the marketing of it because I know how to do it and all that Yes. stuff. So I do it for them. And the second thing is that I make designs and like for these products that I just said, keep print on demand. So I do these things and list it on different across the sites and do a lot of marketing on that as well. Yes. So you're multitasking a lot. Yeah, so we need to prioritize ना, like कि कौन से Yes. दिन में क्या काम होगा, मंडे को ये होगा, ट्यूसडे को ये होगा, वेडनेसडे को ये होगा. So like that. I'm not doing all the things in a one day. I'm not doing like that. Yes. And the last question is like is there anything that which we have left and you want to tell our audience that so you can continue? Well, I think most of the people online are just watching crap. So Yes. stop watching crap. Start watching this video and a lot of videos like this that are gonna come on this YouTube channel. So keep watching it on the YouTube channel or wherever you find Team Anubhav. Keep watching it, and you're gonna find a lot of insights because you never know what can change your life. So stop Yes. watching stupid reel videos on Instagram or like YouTube Shorts on YouTube, obviously. So stop watching those and start focusing on valuable content. Maybe you can find something and maybe you can get a job opportunity as well. होप आपको ये इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने मिला होगा एंड बिकॉज ट्रस्ट मी, मुझे तो बहुत कुछ सीखने मिला. जो सर का पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेके एंड हाउ इज़ वर्किंग हार्ड फॉर हिज ड्रीम्स, इट्स जस्ट अमेजिंग. एंड प्लस आप अगर इस चैनल पे न्यू है so please subscribe to our channel, and we do have an Instagram handle too, so please follow us on Instagram, and same follow the Shubhendu sir also on Instagram, and see you next time with yet another interview. Thank you.